The topic which we are going to study today is known as staining. So whenever we need to study the cell structures or the cellular organelles, we need to take a microscope, the most advanced microscope, which is known as transmission electron microscope. In this picture you can visualize this TEM, transmission electron microscope. So when we are studying organelles, they can be visualized as black and white under the microscope, which is very difficult to study. So what the scientists do, they stain these organelles. So what is staining? Staining is a use of a stains. It is a method in which we dye or a mixture of a dyes are used to make the microscopy, a use of a microscope to study the cell or the cell organelles easier, to make them visualize, to make them show prominently. There are three types of the staining. The very first type of a staining is a single staining. The principle which is applied here is that the basic stains having a positive charge is going to stain the acidic organelles having a negative charge. For example, हम लोग यहाँ पे बोरेक्स कार्मीन लेते हैं. बोरेक्स कार्मीन हमारे पास एक बेसिक डाई है, बेसिक स्टेन है, और जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो ये न्यूक्लियस को जाके स्टेन करता है. वाई? बिकॉज ये बेसिक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये न्यूक्लियस को जाके क्यों स्टेन करें? बिकॉज जो हमारे पास न्यूक्लियस है, इट कंटेन्स अ जेनेटिक मटीरियल, इट कंटेन्स योर डीएनए, और डीएनए इज कंपोज ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. सो दैट्स व्हाई वी कैन सिंपली से कि न्यूक्लियस इज नेगेटिवली चार्ज. सो न्यूक्लियस क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है, दैट्स व्हाई बोरेक्स कार्मीन विच इज बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज है, वो जाके स्टेन करता है न्यूक्लियस जो कि एक नेगेटिवली एसिडिक ऑर्गेनेली है. So that's what it is done in the single staining. The second type of staining which we are going to study is double or differential staining. We have basically three types of staining. First type is single staining, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम ये लोग एक ऑर्गेनाली को स्टेन करते हैं. सेकंड इज डबल एंड डिफरेंशियल, जिसके अंदर हम लोग दो ऑर्गेनालीज को स्टेन करते हैं. एंड थर्ड टाइप इज स्पेशल स्टेनिंग, एज इट इज नॉट मेंशन्ड इन द सेकंड ईयर बुक, सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इज डबल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग में हमारे पास क्या होता है, two organelles which are we going to stain. The very first organelle is nucleus. हम लोगों ने सिंगल स्टेनिंग में डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल विच इज़ मेड अप ऑफ अ डीएनए, और जो डीएनए है इट इज़ मेड अप ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड्स, एंड न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है विच इज़ नेगेटिवली चार्ज. सो इन जनरल वी से जो आपके पास न्यूक्लियस है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, सो इट इज़ एसिडिक. सो टू stain the acidic structure, negatively charged structures, we use a stain or a dye, hematoxylin. And the second organelle which we are going to stain is the cytoplasm. Cytoplasm is comparatively a positive charge because of the presence of a proteins, so it is positive, a basic organelle. And to stain the cytoplasm we take a negative acidic eosin stain. So that's what it is done in the double or the differential staining. We just have to stain acidic against a basic and basic against an acidic.